Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार। मार्केट मंत्र के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरें, और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है वरिष्ठ बाजार विशेषज्ञ उद्यन रे जी। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है अनुभा। Thank you, Nikhil. Prime Minister Narendra Modi to be on a 2-day visit to Indonesia from tomorrow to attend the 20th ASEAN-India Summit and 18th East Asia Summit. Ahead of the G20 Leaders Summit, meeting of the finance deputies of G20 countries underway in New Delhi. And key domestic share indices log modest gains. Sensex finishes at 65,780. Nifty settles at 19,575. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से इंडोनेशिया की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। G20 देशों के वित्त विशेषज्ञों की बैठक नई दिल्ली में जारी। ये बैठक G20 देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित हुई और प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में मामूली बढ़त। सेंसेक्स 65,780 और निफ्टी 19,575 अंक पर बंद हुआ। Market Mantra, Mantra. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से इंडोनेशिया की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी इंडोनेशिया के जकार्ता में होगी। विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के सौरभ कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन विशेष है क्योंकि पिछले साल भारत आसियान संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री आसियान भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और आगे की दिशा तय करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि आसियान के साथ भारत के संबंध एक्ट ईस्ट नीति के साथ साथ व्यापक हिंद प्रशांत महासागर के भारत के दृष्टिकोण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि इस साल के शिखर सम्मेलन का विषय है आसियान मामले विकास का केंद्र। सौरभ कुमार ने कहा कि भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। उन्होंने ये भी कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य नेता पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तंत्र को सशक्त करने के उपायों पर चर्चा करेंगे और साथ ही क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हितों के मामलों पर विचारों को साझा करेंगे। उद्यन जी, एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र की जहां तक बात है तो भारत के हिसाब से देखा जाए दोनों ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लगातार भारत इस क्षेत्र में अपनी नज़र केंद्रित किए हुए अपने विचारों को रखता रहा है और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को लगातार अपने पास लाभ के लिए लाने की कोशिश करता रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, ये तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। जैसा कि हम कई सदियों से जो आर्थिक प्रगति का केंद्र बना हुआ था वो पश्चिम था, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, पर ये अब तकरीबन आम राय है कि पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हिंद प्रशांत जो इलाका है, इंडो पैसिफिक, वहाँ पे आ गया है। और नेचुरली भारत उस ना केवल उसका हिस्सा है, वहाँ पे अलग अलग जो देशों के जो फोरम्स हैं, मंच हैं, वहाँ पे बातचीत, वहाँ पे एक साझा आम राय क्रिएट करना और उसके ऊपर एक्शन करना, वो सारे इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। जैसे क्लाइमेट एक्शन के बारे में बातचीत हो रही है, दूसरे चीज़ों के बारे में रेगुलेशन, फाइनेंशियल रेगुलेशंस के बारे में बात हो रही है। और ये जो हिंद प्रशांत का जो इलाका है, ये बहुत ही इकोनॉमिक एडवांसमेंट
का इलाका है। जैसे आप सिंगापुर ले लें, जहाँ पे आपके पूरे फाइनेंशियल ईस्टर्न, हांगकांग ले लें, फिर जितने फाइनेंशियल सेंटर की तरह है, जो काम लंदन करती है यूरोप में, वो काम आपके इधर सिंगापुर करते हैं। और उसी तरीके से भारत में भी कुछ सेंटर्स बनाने की कोशिश होती है। ये तो मैं फाइनेंशियल उसमें बात कर रहा हूँ, पर कई ऐसे ऐसे इलाके हैं, ना केवल आर्थिक रूप से, ये तो आर्थिक जो डिस्कशंस हैं वो वहाँ पे होंगे और क्लाइमेट रिलेटेड, पर डिफेंस ओरिएंटेड जो बातें हैं वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हो गया है। और अलग अलग जो ग्रुपिंग्स हैं और या अलग अलग मंच जो बने हैं जहाँ पे भारत काफ़ी सक्रिय रोल अदा कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट हो गया है। दो बातें उभर कर आती हैं सामने, जैसे कि एक हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं और रुपए में बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, लगातार बढ़ावा दिए जाने की बात हो रही है। तो ऐसे में ये जो मीटिंग्स हैं इनका अपना एक अलग ही महत्व है कि भारत अपने आप को विस्तार देने के लिए कोशिश कर रहा है। दबे पांव ही सही, लेकिन भारत ने एक ऐसी स्थिति खड़ी कर ली है कि अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ रख सकता है। देखिए, अब तो दबे पांव वाली बात भी गई, तो और एक नए आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमारे देश में बहुत इंटरेस्टिंग दौर से हम गुजर रहे हैं। कुछ लोग अभी हैं जो अभी जो पीछे का जो मानसिकता है वो अभी भी वो उनके ऊपर अभी भी हावी है। तो जो मान लीजिए आज 40-50-60 साल के हैं, वो उस दौर से गुजर चुके हैं, वो देख चुके हैं, तो वो एक लेगेसी को कैरी करें माइंडसेट की, जो सन 90 या 2000 से में पैदा हुए हैं। वो एक अलग कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्होंने वो चैलेंजेस या वो लिमिटेशंस भारत को में नहीं देखी जो पीछे की पीढ़ी ने देखी। तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस है। और जो सरकार जो है वो मिरर करेगा जो मेजॉरिटी लोग हैं उनके एस्पिरेशंस को। तो एक्यूरेटली अगर सरकार प्रतिनिधित्व करती है, तो क्योंकि हमारी यूथ सेंट्रिक पॉपुलेशन की बनावट है, तो इसलिए हमें वो कॉन्फिडेंस, वो श्योर फुटेडनेस के साथ बातचीत हो रही है। और क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी चल रही है कंपैरेटिवली, तो उसके लिहाज से नज़रें भारत की तरफ टिकी हुई हैं और सब भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, इंगेज करना चाहते हैं। और भारत, गुड न्यूज़ ये है, भारत भी इंगेज करना चाहता है। कई ऐसे मोड़ आए हैं इतिहास में जब भारत ने जो दो राय में भारत अपने में ही अंदर ही तरफ कंसंट्रेट करने का निर्णय भारत ने लिया था। आज वो स्थिति नहीं है। भारत अंदर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है खुद को, और वो उसके लिए वो विश्व के दूसरे जो देश हैं उनके साथ मिल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि 70 के लेट 60s और 70s में ईस्ट एशिया, जो आसियान के बारे में बात करें, वहाँ पे वो हाई ग्रोथ एरिया रहा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है डायलॉग और पार्टनरशिप जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो जितने ग्रोथ सेंटर्स हैं आप देखेंगे, वहाँ भारत वहाँ पे जाके वो प्लग इन करने की कोशिश कर रहा है। और वो भी क्योंकि भारत अब उस मकाम में पहुंच गया, उस स्तर पे पहुंच गया जहां पे उनको भी लगता है कि उनको काफी फायदा है। Udayan, how important is the Prime Minister's visit, to the ASEAN with so far as trade ties are concerned? Because trade is a very important part of India-ASEAN grouping, and we've seen there has been the trade deficit has been widening. So how significant the Prime Minister's visit is from that point of view? Yes, the idea is to sometimes what happens, Anuva, is you need somebody at the top to open things up. Sometimes you take an initiative, and what happens is, although a lot of groundwork typically happens in before summits, nobody just goes there and starts discussing. So there's a lot of groundwork that happens. But sometimes it needs somebody right at the top to take that initiative and break the ice or break the stalemate, and give it that little nudge which will push it across the line. So sometimes that those things happen. So you try to open new things up, and get into a new understanding, and there's a lot of importance is there between as far as rapport between leaders are concerned. So that is important. But in terms of trade deficit, we have to understand one thing. A lot of the stuff that comes from that region,
those are things we need. For instance, palm oil we need. There are other things that we need, tin, etc. All those kind of things we need. So those are things we need, right? So we will have to figure out things that they need, and we need to give to them. So we can, and ideally they should not be commodities, because commodities go through cycles. So you would want to produce finished goods. So you would want, say, you want to become some kind of hub, so that you produce a slightly high value product. Okay, so maybe you become a car exporting hub, but that's tough because Thailand already has a good auto component base. Electronics, there's a good component base, if I'm not wrong, in Malaysia. So all these things are already there. So we'll have to figure out smartly how we can do things, and already things are happening, but we can possibly do a better job. But that mix that you're talking about, it will take some doing, it will take some doing. And now that people, once you unleash the entrepreneurial, make it easier for say people in India to do trade out there, then you might just start finding things suddenly emerging and new growth areas coming up. So yeah, that's important. That gap is important. But then we've got a gap with so many other countries as well. Right. Moving on, the meeting of the finance deputies of G20 countries is underway in New Delhi. The meeting is being conducted ahead of the G20 Leaders Summit. The delegates are deliberating upon finalizing the outcomes of the G20 Finance Track Working Groups 2023 under India's G20 presidency. The members are discussing views on financing for Sustainable Development Goals, or SDGs, including climate action to facilitate the development of a sustainable and resilient global economy. Delegates are also exchanging views on priorities for appropriate financial regulations and ensuring financial stability through a common approach. Finance deputies from member states, including the US, Britain, UAE, Council of EU, and Spain, are present at the meeting. Udayan, what do you make of this meeting? How important is this meeting of the finance deputies of G20s, which is right now underway, and given the kind of issues that are being discussed? Well, Anubhav, it's always good when you're doing trade. It's always good to have uniform regulations. So it's a nightmare if you have to if suppose you're dealing with 6 countries and you have got 6 mountain loads of regulations to comply with or adhere to, then it becomes a problem. So if there's a common consensus, common format in which you're doing your all kinds of activities, then it becomes that much quicker. So if you want to have a resilient supply chain, which is the buzzword for some years now, then you would need things which are easy. So suppose there's a product where something is being produced in one country, and then it's getting there's another component being produced in another one, and third country is producing something, and it's getting assembled in the fourth one. Now each one cannot be having separate regulations. So you have to make it so easy, so simple, and so quick. Quickness is very important, that the whole thing happens very quickly and it goes to the customer very quickly. Now, which are the areas? You can take the example of payments. Yes. Sometimes just doing a shipping from one country to the other, you have to do so many documents and so many things you have to do. And now also what's happening, Anuba, we are going digital. Yes. So everything that you used to do in paper is now going to the digital. So the protocols, the formats, and everything has to be so good, so uniform, that there's no problem in doing a sort of trade. Then there are things like security, doing transactions secure, dealing with fraud and other cyber threats. Those are lots of areas where where these discussions, whether it's crypto, whether it's compliance, how central banks will adopt, if there is a discussion on digital currencies, what have you. So if there is a consensus as to how people are going to move, then G20 are basically the movers of the world economy. Then it will become much easier to do business globally.
और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं, शेयर बाजार पर नजर डालते हैं। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बावजूद भारत के प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक की बढ़त के साथ 65,780 के स्तर पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 46 अंक की वृद्धि दर्ज करता हुआ 19,575 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार का प्रदर्शन बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.1%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% की तेजी के साथ बंद हुए। Key domestic share indices today logged modest gains. Both stocks added even as cues from majority of the global stocks were negative. The BSE Sensex finished 152 points up to end at 65,780, while the NSE Nifty settled 46 points up at 19,575. In the broader market at the BSE, the mid-cap index surged 1.1% and the small-cap index rose 0.6%. In the Sensex index, out of 30 companies, shares of 18 companies appreciated while 12 declined. Sun Pharma climbed 2.1%, while Titan and ITC both rose 1.3%. On the other hand, Ultratech Cement declined 1.5%, Maruti fell 0.9%, and HDFC Bank slipped 0.6%. In sectoral indices at the BSE, healthcare sector gained 1.3%, realty rose 1.1%, and energy index added 1%. On the other side, telecommunication ended 0.2% down, while financial services and BankX both slipped marginally by 0.1%. The overall market breadth was positive as shares of 2,141 companies appreciated and 1,532 companies declined. A total of 144 shares remained unchanged. Udayan, this is the third straight session when the Sensex has ended in green. More importantly, we have seen the mid-cap and small-cap indices doing very well. In fact, the mid-cap index today gained 1% to hit an all-time high. What are the reasons behind this phenomenal surge in the mid-cap and small-cap indices? As I've been mentioning, and about the mid-cap space, they've actually appreciated by 26%. One of the couple of reports are saying that they have gone up by 26% this year. Now, there's also a report, very interesting report, which was reported in one of the newspapers today, where they're talking about in value-based sort of candidates, stocks, that float has decreased. Okay. So what's happening is when we're talking of value, you are buying the share so that you know that it's undervalued. The market has not valued it what you think, and over a period of time, the intrinsic value is such that over a period of time it's going to go up, and you're going to go and you're going to book a profit at some point, right? Now that has gone down. So in this program, even in the past, I mentioned that what typically happens is when you start investing, you start with those large cap, those guys with the blue chip, highest capitalization. When you start running out because they are getting priced up, because more you demand, the prices are going up. Then you say that okay, this is too this is too rich now. Let me just go down. Then you go to mid cap, then you go to small cap. What to talk about mid cap? Even small caps have done. So what happens is after a point of time, you're running out of. It's true actually. You start running out of options, and in terms of alternatives, where from a value point of view, you think that you will be able to get it. There are other momentum and other philosophies. Now that is exactly which I think is happening, is where you feel the large investors have figured out that they have exhausted the big guys and not so big guys, and they're increasingly going down. But the problem, Anubha, is this, that when you go mid-cap downwards, then an investor also becomes susceptible, vulnerable to fluctuations. So typically when somebody is investing, the center of gravity for an investor, not a trader will look at it differently. For an investor, the core, they call it core and satellite. And the core is the bulk of your investment. That needs to be on large cap and really, really respectable mid caps. And then you have a satellite which is say 10, 15, 20% of your equity investment, stocks, stock related investment. You keep it there and make sure that so
because why do you want to do that? You don't want your overall returns, yearly returns, to fluctuate too much. Why? Because if you can do a math yourself and you can see when your portfolio returns fluctuate too much, eventually 10 years down the line you're not going to be saving as much compared to a person who's getting a stable high return. So you want consistency you want high returns, but you want them to be consistent. Both are important. उदिन, अगर सेक्टर वाइज हम बात करें तो निवेशकों की दृष्टि लगातार रेलवे सेक्टर्स पर लगी हुई है। रेलवे लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और जो शेयर खरीदने वाले छोटे निवेशक हैं वो भी अपने आप को फ़ायदे में ही पाते हैं। किन बातों को आप इनके पीछे मानते हैं? देखिए, एक तो आपने पीछे जीडीपी का डेटा देखा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और उसका रोल जो है, उसका सहरा जो है सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के ऊपर जाता है। तो वो जब इतना ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर है वहाँ पे रेलवे भी आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ गई, सब चीज़ें आ गई। तो आप इंडिया को अगर देखें ना, वो जो कंस्ट्रक्शन का जो साइन होता है ना, जहाँ पे वो फावड़ा लेके जो साइन होता है, वो भारत के साथ वो फावड़ा वाला साइन आप लगा सकते हैं। ये होल कंट्री इज अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इतना इंफ्रा हो रहा है और चाहिए भी, क्योंकि आप आगे क्या होता है कि अगर आपके पास वो ढांचा सही नहीं होता तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपका सप्लाई बॉटलनेक हो जाता है, तो आपके लंबे जैम हो जाएंगे, लंबी कतारें हो जाएंगी, वो नहीं होना है। तो वो कारण है कि लोगों की नज़र अब वहाँ पे पड़ गई है, अब रेल के ऊपर पड़ी, कहीं कुछ और जगह में पड़ रही है। तो सुखद खबर ये है कि कई ऐसे सेक्टर्स और सेक्टर्स और हैं, दूसरे सेक्टर्स और हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्शन और उसके जो है नतीजा आपको कंपनी के रिजल्ट्स में भी दिख रहे हैं। पर कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे कंपनियां हैं जिनके मैं नाम भी नहीं लूँगा, वो ऐसी पेनी स्टॉक्स हैं या कुछ और स्टॉक्स हैं, तो ये जो हाई टाइड में वो आपके नाव भी ऊपर जाते हैं और टूटे फूटी चीज़ें भी ऊपर जाती हैं। थोड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात कर लें तो इसमें लगातार हम बढ़त देख रहे हैं। अगस्त महीने में 8% बढ़त देखी गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात कही और डेवलपमेंट की बात कही, दोनों ही बातों में इनका एक बड़ा हाथ रहता है कि अगर एक कंट्री लगातार डेवलप हो रही है तो उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक बड़ी भूमिका रहेगी। बिल्कुल, और ऑटो में अच्छा चल रहा है, पर एक चैलेंज जो है वो ये आते हुए नज़र आ रहा है कि डिपेंड करते सितंबर में आपकी रेनफॉल, बारिश कैसी होती है, मानसून का कैसे होता है, क्योंकि अगर रूरल डिमांड, कंट्री साइड में आपका जो डिमांड है वो कैसे रहेगा। ऑटोमोबाइल का एक प्रॉब्लम पिछले साल ये था कि जो आपके चिप्स थे, दूसरे पार्ट्स थे, वो वाली प्रॉब्लम थोड़ी हल होती हुई नज़र आ रही है, तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। पर कुछ और सेगमेंट्स हैं ऑटो में, जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, वहाँ पे आपको चैलेंज दिख रहा है और वो सीधा दिख रहा है रूरल कंट्री साइड, मतलब देहात में का जो डिमांड है, देहात का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो आने वाले कुछ वक्त में काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसे वो प्ले आउट करता है। जी, रुपए पर नजर डालते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में बढ़त के साथ रुपया आज 83 रुपये 4 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 104.74 पर कारोबार कर रहा था। The RBI Exhibition Pavilion is being set up at the 18th G20 Summit in New Delhi. The summit will be held on the 9th and 10th of September at Pragati Maidan in New Delhi. Sources said 5 items will be showcased and put up for live demonstration during the summit. These are UPI One World, Central Bank Digital Currency, Public Tech Platform for Frictionless Credit, RuPay on the Go, and Bharat Bill Payment System. The RBI will showcase an informational video on the RBI's digital rupee and its journey. The live digital rupee transactions will be demonstrated by select banks that are participating in the exhibition. Talking to reporters at the International Media Center of the G20 Summit in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur said the RBI has put up an exhibition on digital payments and it will be an international attraction on how India has progressed in digital payments. Udayan, India's progress and India's success so far as digital payments is concerned, it's being talked all over the world. In fact, we've been walking the talk, be it the UPI or the DPI, all these. So, I mean, given the fact that we're just a few days away from G20 presidency, what is,
What would you say that are the UPI the biggest showcase for India so far as digital payments are concerned? Undoubtedly, there's no doubt, and I mean numbers speak for themselves. People just will have to see it, and the whole deal is now that we have done it. It's a very robust system. So many people are using it. We have been there, done that. Now the question is if we can start make other people start using it. But the next frontier for us would be international payments. You know that almost 100 billion. That's the kind of remittance that comes in, and it's still very complicated. It's not still as simple as it should be. Yes, it should be like UPI, and that's where we need to go, and that's where CBDC, which is the digital currency, and some of the other things that they are trying, those would be the next. And if we get that right, that will be the next logical step and the next frontier. और एशियाई बाजारों की ओर चलते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज ज़्यादातर गिरावट देखी गई। केवल जापान का निक्केई सूचकांक 0.3% बढ़त में रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 2.1% लुढ़क गया। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.7% नीचे आ गया। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम सूचकांक 0.4% की सुस्ती में रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.1% की मामूली गिरावट आई। यूरोपीय शेयर बाजारों में आज सुस्ती देखी गई। केवल लंदन का FTSE 100 0.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। फ्रांस के कैक 0.4% और जर्मनी के डेक्स 0.2% नुकसान में चल रहे थे। उद्यम सिर्फ चाइनीज इकोनॉमी के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्लो डाउन देखा जा रहा है। देखिए, अभी भी वो लोग 5% के बारे में बात कर रहे हैं, और ये श्रोताओं को याद दिलाने की ज़रूरत है। काफ़ी स्लो डाउन के बारे में बात करें, पर चाइनीज़ इकोनॉमी हम भारतीय इकोनॉमी से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है जी। तो 6 गुना ज़्यादा अगर बड़ा है, उसका अगर 5% भी अगर आप लगाते हैं तो वो हमारे 6% या 7% से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। आप सोचिए, मतलब सिमिलर 6 गुना ज़्यादा। तो कई बार क्या होता है, आपका साइज़ इतना बड़ा होता है, अगर अमेरिका अगर 6% में तो ग्रो करता ही नहीं है, तो कई बार क्या होता है, साइज़ इतना बड़ा होता है, और जो परसेंटेज स्टैटिस्टिक्स जो है, आपके जो सांख्यिकी है, वो कई बार आपको दिशा दिखाते हैं, कई बार आपको गुमराह कर देते हैं। तो जब हम ये देख रहे हैं कि हाँ वहाँ पे दिक्कत हो रही है, उनको एक आदत है, उनको कम ग्रोथ की आदत नहीं है। जैसे पश्चिम में लोगों को हाई इन्फ्लेशन की आदत नहीं है, हम रफ एंड टफ हैं, हमें सब चीज़ की आदत है, हमने सब कुछ देखा है, और अभी हमारा वक्त अब हमारा है। Moving on, the US stock markets were closed yesterday on account of the Labor Day holiday. Trading in the three main Wall Street indices, the Dow Jones Industrial Average, the S&P 500 and the Nasdaq Composite will resume today. Moving on to commodities, oil prices today dipped amid a negative report over China's post-pandemic recovery, although expectations of an extension in supply cuts by leading OPEC plus producers limited losses. In intraday trade, Brent crude was trading at $88.55 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $85.40 per barrel when reports last came in. Udayan, a very quick comment, given the fact that Saudi Arabia is widely expected to extend its voluntary cut into October. Russia has already said that it will also announce OPEC plus supply cut deal this week. Where do you see the prices? Experts are looking at about $90, and that's higher, and that's what people are thinking that's where it's going to head. और अब सोने चांदी पर नजर डाली जाए तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के अनुबंध के लिए सोने के मूल्य में 70 रुपए की गिरावट हुई। सोना 59,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सितंबर अनुबंध के लिए चांदी 935 रुपए लुढ़क कर 73,585 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वहीं वैश्विक बाजार में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना आज गिरावट के साथ $1,956 और 50 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो कारोबार में चांदी सुस्ती के साथ $23 और 90 सेंट प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। And that's all we have time for in this edition of Market Mantra. Thank you so much for coming to our studio and sharing your views with us, Udayan. Thank you so much. And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi to be on a 2-day visit to Indonesia from tomorrow to attend the 20th ASEAN-India Summit and 18th East Asia Summit. Ahead of the G20 Leaders Summit, meeting of the finance deputies of G20 countries underway in New Delhi.
And key domestic share indices logged modest gains. Sensex finishes at 65,780. Nifty settles at 19,575. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 6:30 with yet another edition of Market Mantra, where you can get your daily dose of economic, financial, and business news. And from the entire team, Namaskar. नमस्कार.